You can see here that कि जो DNA था, if required, अगर वो बहुत high molecular weight है, ठीक है, only then it is fragmented but sheared into small pieces by mechanical processes, and once it is sheared, its ends are repaired to make them blunt end by the process of blunt and repairing, and TA tailing is there. TA tailing का मतलब है the A tail, that is A poly A tail is added to the one side of the DNA molecule. This poly A tail, it helps in attaching, what is this? This is an adapter called as the Y adapters. It helps in attaching the poly A tail, or it helps in attaching the Y adapter with the help of the poly A tail. So this is what we have got. Okay. In addition to this, you can see that there is some hairpin-like structure also over here, and this hairpin-like structure is added to the other end of the DNA. Okay, and I'll talk about this hairpin-like structure later. And I also want you to pay attention to this red colored circle. You can see that after the addition of the Y adapter, there is another oligo with ये जो yellow color का blob था, that again gets attached with the help of, by complementary base pairing. यहाँ पर complementary base pairing हो रहा है. With the help of complementary base pairing, I have highlighted this part. So with the help of complementary base pairing, this is complementary base pairing. This tether oligo is attached to that means to attach to the strand opposite to the strand to which this black molecule is attached. What is this black molecule? This black molecule is called as the motor protein. क्या कहते हैं इसको? Motor protein. So again, if I tell you that this is your adapter sequence A, okay, and this is also your adapter sequence, but to this adapter sequence is attached a small nucleotide sequence, this one, which is called as the tether oligo. ठीक है? On the adapter sequence, on one strand is attached this black color molecule, which is a protein molecule called as the motor protein. ठीक है? So these are the modifications which are done during the process of library preparation. This adapter, which is added on one side along with this tether oligo, can either be attached on this side also, or as it is visible in this slide, you can also attach a hairpin on this side. Hairpin का क्या significance है, that I'll talk in a minute after I have talked about the adapters, finished with the adapters. ठीक है? Okay. Now coming to the, excuse me. Now coming to what is the significance of these sequencing adapters? अब या sequencing adapters में ये जो प्रोटीन है, जो मोटर प्रोटीन है, ये लगा है, इसका क्या काम है, और ये जो टीथर है इसका क्या काम है. ठीक है? So let us understand that. So again I am showing you a picture wherein you can see that कि हमारा ये DNA है, sorry, हमारा ये DNA molecule है. In this DNA molecule, what we have, this is the DNA molecule, blue color, हमने color change कर दिया है. So this is the DNA. Okay. So this is the DNA molecule. To this DNA molecule, we have, so this is the DNA molecule. To this DNA molecule, we have attached ये white color का जो आपको नजर आ रहा है, this is the adapter sequence. मैंने बताया था adapter sequence होता है. और इस adapter sequence के ऊपर ये पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है कुछ, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मोटर प्रोटीन बोल रहे हैं. ठीक है? तो ये हमने ऐड किया है, डेलिबरेटली ऐड किया है. इसको हम मॉडिफिकेशन बोलते हैं, बेस मॉडिफिकेशन कहते हैं, या डीएनए मॉडिफिकेशन कहते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अ सीक्वेंसिंग रिएक्शन. ठीक है? सॉरी, नॉट सीक्वेंसिंग रिएक्शन, आई एम सॉरी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइब्रेरी जनरेशन. ओके. So what is the function of this motor protein and the adapter sequencing? ठीक है? अब ये करता क्या है? See, now assume a situation. थोड़ा सा आपको assume करना पड़ेगा कि now assume a situation कि आपके पास what you have got is you have got a library, DNA library. Okay, and let us say this is my pipette and I have loaded this library on the flow cell of the sequencer. अब फ्लो सेल में क्या है, सीक्वेंसर के फ्लो सेल में क्या है, सीक्वेंसर के फ्लो सेल हैज गॉट दैट मेम्ब्रेन विद लॉट्स ऑफ नैनोपोर.
आप अज्यूम कीजिए दैट आपने ऊपर से डीएनए छोड़ दिया है एंड नाउ द डीएनए इन अ 3 dimension इट इज फ्लोटिंग इन ओवर दैट फ्लो सेल और ओवर दैट मेम्ब्रेन. What is needs to be done? What is our requirement? हमें ये चाहिए कि that this DNA molecule must not float around in 3 dimension, rather in 2 dimension. ये DNA molecule must go inside the nanopore. Okay, because जब तक ये nanopore के अंदर नहीं जाएगा तब तक ये DNA molecule करंट चेंज नहीं प्रोड्यूस करेगा और करंट नहीं प्रोड्यूस करेगा तो सीक्वेंसिंग सिग्नल नहीं आएगा. So we do not want the DNA molecule to be floating around. DNA is blind. So who is helping in this process? Who is actually, so what we have to do, हमें DNA को catch करना है और हमने DNA को बिठाना है एक जगह पे, ठीक है, so that it goes into the nanopore. Second thing is that once this is done, हमने पकड़ लिया उसको nanopore के पास ले आए. Now the speed at which the DNA molecule is going inside, that must also be controlled. स्लो जाना है, फास्ट जाना है, मीडियम पेस में जाना है, दैट मस्ट ऑल्सो बी कंट्रोल. मतलब उसको कहीं ना कहीं से तो पुश मिलना चाहिए ना. कि थिंक अबाउट कि मैं बैठी हूँ एक होल के सरफेस पे, कुएं के ऊपर बैठी हुई हूँ, बट आई हैव टू जंप इनटू द वेल, बट आई वुड जंप इनटू द वेल ओनली व्हेन देयर इज सम फोर्स. ठीक है, सो व्हाट इज मोटर प्रोटीन डूइंग? मोटर प्रोटीन वो एक फोर्स जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से डीएनए इज पुश्ड इनटू द नैनोपोर at a particular speed and goes through the nanopore. Okay, now what is the अब adapter sequence क्या कर रहा है? Adapter sequence helps in recognizing the nanopore, क्योंकि nanopore के we know the composition of the nanopore, so it helps in recognizing the nanopore, and motor protein gives that extra push to the DNA sequence so that it goes inside the nano hole of the nanopore. Now अब उसको बाहर से लेके कौन आता है? So what is a teether? टीथर का क्या काम है? जो ओलिगो टीथर हमने लगाया था वो क्या करता है? सी, टीथर इज, इफ यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं व्हाइट कलर के. These are the structure which are present on the surface of the membrane. Which membrane? The biological membrane or the synthetic membrane present on the nanopore. Okay, so ये जो in addition to this, the membrane also has number of tiny holes called as nanopore. ये जो व्हाइट कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज टीथर्स. टीथर क्या करते हैं? टीथर दे हेल्प द फ्लोटिंग डीएनए व्हिच इज फ्लोटिंग इन द 3 dimension. दे पुल द डीएनए टुवर्ड्स देमसेल्फ एंड दे ब्रिंग देम क्लोज टू द nanopore. Okay, so what do they do? So the function of the tethering the DNA, so they tether the DNA. Tether means they guide the DNA. Tether the DNA strand to the membrane and reduce the diffusion of the strands from 3 to 2 dimension. Okay, ये इसकी मोबिलिटी को कम करते हैं. डीएनए जो ऐसे फ्रीली घूम रहा है मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको आप 3 dimension से 2 dimension में लाके नैनोपोर के पास लाते हैं, एंड सो दैट बहुत टाइटली नहीं, लूजली, so that it comes in close contact with that of the nanopore and it is directed towards the nanopore. And how does it do that? ये communicate करता है टीथर किसी के साथ, किसके साथ? Which part of the DNA does it communicate? The tether communicates with the oligotether which we had joined or which we have added during the process of library preparation. Okay, so that is the function of a tether. Similar to the DNA library preparation, we have RNA sequencing also. RNA sequencing can further be divided into 2 categories. एक है direct RNA sequencing, wherein we do not need to synthesize the cDNA from RNA and RNA can directly be synthesized. And again, यहाँ पर क्या करते हैं बेटा? यहाँ पर हम, which is different from that of the DNA, is that RNA में most of the RNAs by nature they have poly A tail. Okay. Now this poly, we use this process or we use this property of the RNA कि इसकी जो poly A tail है, poly adenylated जो tail है, हम उसके complementary poly T adapters बनाते हैं. ठीक है, उनको ligate कर देते हैं. अब ये जो poly T adapters हैं यहाँ पर, ठीक है, these poly T adapters they help in the attachment of the sequencing adapter which are containing the motor protein and which are containing the tether oligo.
that helps further in the process of sequencing. Now cDNA PCR sequencing में क्या है, इसमें क्या करते हैं, it is opposite कि from RNA first DNA is synthesized by the process of reverse transcription. Okay, and once we get cDNA, and that's cDNA again, it is used similar to what was used in case of the DNA sequencing. So that is the only difference between the RNA and the DNA sequencing. Okay. Now coming to the library preparation part is over now. Now we will talk about the sequencing technique or the sequencing technology. To start with, when the process of nanopore sequencing was there, nanopore sequencing can be categorized into two categories, and the two types or two categories. The first category is called as the exonuclease sequencing, and the second is called as the strand sequencing. So remember, today only the strand sequencing is being used. The exonuclease sequencing is not used now. Okay, first I will talk about the exonuclease sequencing and then I will talk about the nanopore sequencing. एक्सोन्यूक्लियस का क्या मतलब होता है बेटा? एक्सोन्यूक्लियस का मतलब है कि वो कट कर रहा है न्यूक्लियोटाइड्स को, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है. So if you can see here, in exonuclease sequencing to the DNA is attached an enzyme which is called as the exonuclease enzyme. ये extra है, ये होता था पहले, ठीक है. And in addition to this, what is the function of this exonuclease? And ये अगर आपको ग्रीन कलर का यहाँ पे दिख रहा है कुछ छोटा सा, what it does is that when the DNA, double-stranded DNA comes close to this, it used to cleave the nucleotides one by one and make it enter into the nucleotide pore. उसमें enter करवाता था one by one. What is this red color structure over here? The red color structure is called as cyclodextrin. Cyclodextrin is a chemical molecule which was being earlier deliberately attached to the narrowest part of the nanopore. अब ऐसा क्यों करते हैं? साइक्लोडेक्स्ट्रिन की क्या जरूरत पड़ी? Why it needed to be attached to the closest part of the nanopore? That we need to understand. Okay. तो बेटा होता क्या था एक्सोन्यूक्लियस सीक्वेंसिंग में? पहले साइक्लोडेक्स्ट्रिन क्यों ऐड करते हैं बेटा? जब ये नेचुरल नैनोपोर और बायोलॉजिकल नैनोपोर्स इन्वेंट हुए थे, एट दैट टाइम उन्होंने देखा कि इन नैनोपोर का स्ट्रक्चर बड़ा ही टिपिकल है, एंड द टिपिकल स्ट्रक्चर इज दैट कि दीज नैनोपोर्स दे हैव गॉट अ ब्रॉड एंड टुवर्ड्स द अपर साइड, जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, एंड इट हैज अ नैरो एंड टुवर्ड्स द लोअर साइड विच इज कॉल्ड एज द बैरल, एंड बीच में एक पार्ट है विच इज द नैरोएस्ट पार्ट. ठीक है. अब क्या है हो रहा है कि द डीएनए या जो न्यूक्लियोटाइड है ACTGU, दे नीड टू पास थ्रू द नैनोपोर एंड रीच ऑन दिस एंड, and in that process they will generate a change in the current. But the problem was that कि जितने भी, फॉर एग्जाम्पल हमें HLA, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, HLA प्रोटीन था विच इज हीमोलाइसिन फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. इट वाज फाउंड कि इसका ये जो डिटेक्शन बैरल है, इसकी लेंथ जो है इट इज 5 नैनोमीटर, और हमारा जो छोटा सा न्यूक्लियोटाइड है वो सिर्फ पिकोमोलर रेंज का है. अब ये छोटा सा मॉलिक्यूल बहुत जल्दी से पास हो जाता है नैनोपोर के थ्रू. That means its ability to produce a detectable signal will be less, right? अगर हम सिग्नल ही नहीं फिर से डिटेक्ट कर पाए, इट इज ऑफ नो यूज. या हम सिग्नल डिटेक्ट कर सकते हैं बट वी डू नॉट हैव इनफ टाइम, कि उस टाइम के लिए वो उतना रुक ही नहीं रहे, जल्दी से भाग रहा है कि वी आर नॉट एबल टू कैप्चर द सिग्नल. सिग्नल तो बन रहा है लेकिन वी आर नॉट एबल टू कैप्चर. तो उन्होंने क्या किया, एक डेलिबरेटली एक केमिकल मॉलिक्यूल इंसर्ट कर दिया इन द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द नैनोपोर. तो क्या करता था, एनी मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल एनी न्यूक्लियोटाइड विच वुड एंटर इनटू द नैनोपोर विल फॉर सम टाइम सिट विद द साइक्लोडेक्स्ट्रिन. साइक्लोडेक्स्ट्रिन एक शॉर्ट बॉन्ड बनाता है